लुक एट व्हाट यू हैव कंज्यूम सो फार तुम्हारी लाइफ में। तुम क्या बहुत किस चीज की वीडियोस बहुत देखते हो, एंड जो देखते हो उसको रेप्लिकेट कर दो। जो तुम देख रहे हो टेक इट एज एन इंस्पिरेशन। तुम्हें ऑलरेडी काफी नॉलेज होगी उसके बारे में, स्टॉप वॉचिंग इट नाउ। अब तुम कैमरे के सामने बैठो और अब तुम बताओ कि वो चीज कैसे होती है, क्या होती है, फिर तुमने उससे क्या सीखा। एंड जितना हो सके उस रैबिट होल में डीप जाओ। एंड जब तुम्हें लगे कि अब मैं और डीप नहीं जा पा रहा हूं, देन कम आउट एंड अब कुछ नेक्स्ट खोजो, अब कुछ नेक्स्ट नेचुरल इंक्लिनेशन खोजो अपनी। दैट इज हाउ। तुम्हें क्या लगता है कि जो भी तुम्हारा दोस्त क्लियर है वो कैसे क्लियर है? यू नो, फर्स्ट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। उसने पहले एक्शन लिया, उसने ट्राई करके देखा। मे भी चलो मान लो एक बहुत ही रैंडम किस्म का एग्जांपल, मे भी तुम बी.कॉम कर रहे हो किसी आटू शाटू कॉलेज से, मे भी तुम बी.कॉम कर रहे हो, ओके। अब तुम्हें लग रहा है यार मैं तो बी.कॉम कर रहा हूँ, कंटेंट तो मैं कंज्यूम करता हूँ समय रैना का हंसने वाला फनी, नो फॉल्ट इन दैट। बट जो कंटेंट है ना फनी, अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, बट अगर तुम नेचुरली खुद फनी नहीं हो तो प्रॉब्लमैटिक है, फिर इट इज ओवर फॉर यू। उसके अलावा देखो वो तुम्हें अच्छा लगता है ना कंज्यूम करना, नहीं नहीं, उसके अलावा देखो जिसमें तुम इंटरेस्टेड फील करते हो, जो कि तुम्हें बताऊं क्यों, क्योंकि होता क्या है कि तुम कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकता अगर वो तुम्हें बोर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखता कि तुम नेचुरली किस चीज के लिए बने हो, नेचुरली तुम्हारा खिंचाव किस तरह का, तुम्हें वो साफ साफ पता लग जाएगा उस वीडियो से, या फिर जो भी तुम जब तुम कंटेंट अपना देखोगे डेटा बेसिकली, तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारा नेचुरल खिंचाव किस पर्टिकुलर नीश की तरफ है। एंड नीश जरूरी नहीं कि परमानेंट होनी चाहिए, तुम स्विच भी कर सकते हो। तुम्हें पता है बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं, दीज आर ऑल पॉलीमैथ। पॉलीमैथ क्या होते हैं? जो कि अपने आप को एक चीज में बहुत ऐसे डालते हैं कि बिल्कुल उसके रैबिट होल में एकदम डीप चले आते हैं, बट देन निकल कर किसी और में भी अपने आप को डाल देते हैं, फिर किसी और में भी अपने आप को डाल देते हैं। प्राइम एग्जाम्पल इलॉन मस्क। दैट गाय स्टार्टेड फ्रॉम पेपैल, ऑनलाइन कंपनी है जो कि पेमेंट प्रोसेस करती है। देन ही टुक एन एग्जिट एंड ही वेंट इनटू स्पेसएक्स रॉकेट। पेपैल से कोई कनेक्शन नहीं है, टेस्ला कार्स कोई कनेक्शन नहीं है, बट वाई? बिकॉज ही वाज इंटरेस्टेड, वो उसमें इतना डीप चला गया। एंड वी ऑल नो हाउ सक्सेसफुल ही इज। बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, सो मेनी थिंग्स। और ये तुम्हें कॉमन दिखेगा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत क्रेजी क्रेजी लेवल अचीव कर रखा अपनी लाइफ में, तुम्हें उनमें ये पैटर्न बहुत कॉमन दिखेगा कि वो लोग सारे पॉलीमैथ्स हैं। दे डू वन थिंग, देन दे डू अनदर थिंग, एंड तुम भी कर सकते हो। बिकॉज व्हाट डू यू हैव टू लूज? तुम्हारे पास कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं। यू ओनली हैव एवरीथिंग टू गेन। You get me? And I feel it should make sense to you. It made sense to me. That is why I'm sitting in front of camera right now, because I don't have anything to lose. At max क्या होगा, व्यूज नहीं आएंगे, 4 लोग नहीं देखेंगे, मेरी तो स्किल्स इंप्रूव हो रही है ना बात करने की। दिस वुड देन फर्दर शोकेस में जब भी मैं कोई नॉर्मल जॉब करूंगा, जो कि मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो वहां जॉब में ये जो स्पीकिंग स्किल्स है काम आती है। इफ आई एम एबल टू फ्लुएंटली टॉक टू अ कैमरा from the top of my head without thinking, without a script, then it would eventually show up in other aspects of my life. Very true. बट हाँ, वी वर ऑन दैट बी.कॉम लड़के का एग्जाम्पल। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपना कोर्स उठा लो, जो भी कोर्स कर रहे हो, और उस कोर्स में इंटर्नशिप्स ले लो। गो आउट, वॉच कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। मान लो अगर तुम्हें इंटर्नशिप, तुम इतने मेहनती भी नहीं, तुमसे नहीं होने की भाई इंटर्नशिप, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड ही हो, एकदम ही लॉस फील कर रहे हो, तो बताओ नेक्स्ट क्या करो? यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि जिस भी नीश, जिस भी फील्ड में तुम अभी हो, जिसकी तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो चीज तुम्हारे काम भी आएगी, क्या वो तुम्हें काम पसंद भी है, जो काम उसमें करा रहे हो तुम्हें अच्छा भी लगता है? अगर नहीं तो फिर मूव ऑन, फाइंड समथिंग नेक्स्ट। एंड अगर तुम लॉस्ट हो कि फाइंड समथिंग नेक्स्ट, तो उसका सोल्यूशन तुम्हें बता दिया मैंने कि अपना डेटा देखो कि तुम क्या कंज्यूम करते हो, तुम्हें क्या देखना पसंद है, तुम किस चीज की तरफ के खिंचाव सा फील करते हो, एंड देन उस पर बैठ के कंटेंट बना लो। इफ नॉट कंटेंट, देखो कंटेंट इज नॉट द ओनली थिंग। तुम रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हो, अब पता नहीं तुम क्या कंज्यूम करते हो, बट हाँ रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हो अपने कॉलेज में ही। और उसके अलावा देर इज जस्ट सो मच टू डू। बताऊं, काम की तो कमी है ही नहीं अगर तुम्हें जेन्युइनली काम करना है। बट अगर तुम्हें सिर्फ कोप करना है, तो ये तो बस एक ही वीडियो है, इसके बाद तुम अगली वीडियो देख लेना, फिर एक वीडियो और देख लेना, क्या पता उससे पर्पस क्लियर हो जाए तुम्हारा, बट होने नहीं वाला मोस्टली। अगर तुम एक्शन नहीं लेना चाहोगे तो तुम पूरी जिंदगी लॉस्ट रह जाओगे। अगर शायद से मैं एक्शन ना लेता तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या करने के लिए बना हूं, या किसमें मेरे को मजा आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, वटेवर कुछ भी पता नहीं चलता। मैं भी शायद तुम्हारी तरह बेड पे बैठ के वहां पीछे लेटा रहता, रील स्क्रॉल करता रहता। तो हाँ, इफ यू आर डन कंज्यूमिंग इनफ, देन आई थिंक यू शुड रियली सिट विद योरसेल्फ। डू नॉट वॉक अवे, उस चीज से भागो मत, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को इग्नोर मत करो। जब भी खराब फील हो रहा है अपना फोन मत उठाओ, खराब फील होने दो, जब तक हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। बैठो तो देखो तो सही, कब तक ही फील कर लोगे खराब? 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 6 घंटा, कब तक कर लोगे? तुम ऑटोमेटिकली नोटिस करोगे एक पॉइंट के बाद तुम्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली टाइम के साथ जो पावर है ना उस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अलोन और लॉस्टनेस की, वो अपने आप पावर उसकी कम होती आती है अगर तुम उसको एम्ब्रेस करने लगते हो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे और फाइटिंग इट। सिट देयर, बिकॉज फीलिंग्स तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है एंड ऑफ द डे। नाउ अगर तुम अब तक वीडियो में बने हुए हो, सो आई हैव समथिंग बोनस फॉर यू। ये मैंने काइंड ऑफ एक स्क्रिप्ट काइंड ऑफ लिखी थी, स्क्रिप्ट भी नहीं बट
समथिंग जो कि मैं हर वीडियो में रखता हूँ. आई एम ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ थिंग्स हियर कि क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं. सो यूजुअली जो मेरे थॉट्स हैं मैं उनको नोट डाउन करता हूँ. तो ये मेरे नोटेड डाउन थॉट्स हैं जो कि शायद से तुम्हें एक बेटर पर्सपेक्टिव दे पाए. सो इफ यू वांट, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन अच्छा है, इफ यू रियली वांना ब्रिंग अ चेंज और मेक अ चेंज इन योर लाइफ और व्हाटएवर, देन आई वुड आई वुड रियली आस्क यू टू सिट अ बिट मोर एंड इस चीज को रीड करो. इफ यू डोंट वांट मी टॉकिंग, देन पॉज द स्क्रीन एंड रीड दिस. ओके, लेट्स गो. You are not lost. You are just avoiding yourself. Where it comes from. Everybody feels this at some point. You are sitting alone, or maybe you just finished scrolling for 2 hours, and suddenly this feeling creeps up. A quiet shame, a heaviness, that voice that says, "What the fuck am I even doing with my life?" And it feels urgent. It feels like something is deeply wrong. Like everyone else has figured something out that you have completely missed. But here is what is actually happening. That feeling is not new. It has been building for a long time. Every time something uncomfortable came up, every time the uncertainty crept in, you reached for your phone. You put on a reel, you distracted yourself with something easier, and the feeling went away temporarily. But it never actually left. It just went back. It just went underground, and now it is coming back up with the weight of everything you refused to feel before it. That is why the void feels so overwhelming. It is not just today's uncertainty, it is years of avoided feelings all arriving at once. The shame that was planted early. अब ये बात करता है कैसे तुम्हारे जो पेरेंट्स और सोसाइटी ने ओवरऑल तुम्हें इतना दबाया है, टीचर्स वगैरह इन सब ने, उसके बारे में पैराग्राफ स्पेसिफिकली. A lot of this shame is not even yours originally. It was planted by teachers who made you feel stupid in front of a class, by parents who reminded you of everything you were not, by a system that spent 12 years making you feel like your value was determined by marks on a paper. And that programming does not disappear when you grow up. It just waits. And then, when you are alone and quiet, it comes back up and tells you that you are not enough and you do not know what you are doing and everyone else is ahead of you. That voice is not the truth. It is just an old pattern that never got challenged. Let me check whether the recording is on or not. Why you feel lost? Here is the honest reason most people feel lost. Not because they're stupid, not because they're uniquely broken, but because they have spent years consuming and almost nothing building. You have watched thousands of hours of content. You have scrolled through millions of reels. You have consumed other people's lives, other people's opinion, other people's achievement. And somewhere in all of that consuming, you forgot to actually do anything yourself. And when you have never really tried things, when you have never put yourself into something and felt what it is like to work towards something real, you genuinely do not know. You genuinely do not know who you are or what you want because you have never given yourself the chance to find out. The lostness is not a mystery, it is the natural result of years of avoidance. The content you consume is actually data. Here is something worth paying attention to. What do you actually watch? What do you think you should watch? What do you actually keep coming back to? If it's philosophy and human behavior you keep gravitating towards, that is not random. If it is fitness and discipline, that is not random. If it is finance or business or gaming or music, none of that is random. You cannot consistently consume something that genuinely bores you. Your brain will always drift toward what actually interests it. So look at your consumption honestly. Somewhere in there is a signal about where your actual interest lives, and that signal is the starting point. Nobody is certain. I want to say something directly. Nobody has it figured out. Not the person who seems the most confident, not the one posting about their 5 year plan, not the one who sounds certain about everything. Everyone is navigating uncertainty. The difference is some people are navigating it while moving, and some people are navigating it while standing. The ones who seem certain are mostly just further along in the moving, and the moving itself is what created the clarity, not the other way around. You do not find yourself and then start. You start and then find yourself. What actually helps? Stop waiting to feel ready. You will not feel ready. Get an internship in whatever field you are currently in or think you might be interested in. Go touch the actual work and see how it feels. Watch someone else doing the job you think you might want. Research for 20 minutes instead of scrolling for 2 hours. And if none of that gives you a clear answer, start building something anyway. Anything. The building itself will teach you more about who you are than any amount of thinking about who you are ever will.
Change your environment. Get out of your room, go somewhere different, talk to different people. Your current environment is part of what is keeping you stuck because it is familiar and familiarity is comfortable even when it is suffocating. Sit with the void. Here is the thing nobody tells you about the void. You do not have to fix it. You just have to stop running from it. Every time you reach for your phone when the uncomfortable feeling comes, you are training yourself to be more afraid of it. And the more you run from it, the bigger it gets. But if you sit with it, if you just let it be there without immediately escaping it, it starts to lose its power. Not all at once, but gradually. And in that stillness, in that discomfort you stopped running from, something starts to emerge. A sense of what actually matters to you, what you are actually curious about, what you would actually do if you stopped performing for everyone else. You do not look into the void, and the void will not look back into you. But if you sit there and face it, it will show you something about yourself that years of distraction never could. The only thing that actually matters. Passion pays eventually, but not immediately, and not without reps. Your first day at anything, you will be terrible. Your first video, your first internship, your first attempt at anything real. It will not match the standard you imagined. That is not failure, that is just day one. Keep putting in the reps. The work teaches you as you go. The results come later. The happiness comes from the work itself, not from the destination. And yes, you will still feel the void sometimes, even when you are working, even when you are building. That is normal. That is just part of being alive and uncertain and human. But it will feel different when you are moving. It will feel manageable instead of suffocating because now you have something to put your energy into instead of just sitting with it going nowhere. You are not lost, you just have not started yet. Start, everything else follows. So I think I was very clear with whatever I had to say to you guys. And iske baad, it's all on you. If you still feel lost, if you still feel that you don't know what's actually going on in your life, then feel free to drop a comment, and it would be a pleasure for me to help you out if you are actually that lost. And I promise you, it's just a temporary situation, and none of these things are permanent. Eventually, when you start taking action in any direction, तुम्हें क्लैरिटी आती जाएगी रिगार्डिंग दैट डायरेक्शन और मे बी समथिंग एल्स यू वांटेड टू डू. बट तुम्हें दिखेगा कि इसमें तो मजा नहीं आ रहा, इससे बेटर तो काश मैं ये कर रहा होता है, एंड वो जो काश है फिर तुम्हें उसको परस्यू करना है, एज सिंपल एज दैट. एंड वंस यू स्टार्ट द वर्क, इवेंचुअली क्लैरिटी फॉलोज, एवरीथिंग फॉलोज. ये जो फीलिंग अपने आप सप्रेस हो जाती है, द मोर यू रन अवे फ्रॉम इट, उतनी एम्पलीफाई जरूर होती है. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस.